Welcome back. An 800-meter stretch of the Jaipur-Ajmer National Highway near Bhankrota turned into a scene of unmitigated tragedy and devastation. At about 5:30 am yesterday, a collision between the LPG tanker and a truck set off a chain of explosions. Eyewitnesses revealed that the tanker was making a U-turn near a school junction when a linen-laden truck speeding down the opposite carriageway crashed into it. Such was the impact that it broke the tanker's nozzles, releasing a gush of LPG into the air that fueled serial explosions that followed. The gas leak rapidly spread the fire, giving those in nearby vehicles little chance to escape. Witnesses reported seeing people desperately running and removing clothes engulfed in flames. The explosions have left 14 people dead and 26 critically injured. It also left a row of about 40 vehicles charred. This included several trailers, trucks, containers, 2 buses, multiple pickup trucks and motorcycles, an auto rickshaw and 7 cars. Meanwhile, locals stated that it took 8 hours to quash the flames. They also reported experiencing eye irritation and breathing difficulties due to the dense smoke. Some locals also noted finding a few dead birds in the area. Meanwhile, the central government has announced 2 lakh compensation for the families of those who lost their lives. Additionally, the Rajasthan government has announced an ex-gratia of 5 lakh rupees for the kin of the deceased and 1 lakh for the injured. The Supreme Court Committee on Road Safety has directed Chief Secretary to submit a detailed report on the incident. A high-level committee has been constituted to thoroughly investigate all aspects of the accident, including an in-depth examination of the road's construction if applicable. Joining us at this point is Harvind Singh Shekhawat, eyewitness. We also have Anurag Kulshrestha, road safety expert, joining us live. Also with us live is Ellen Rao, former DCP, Delhi Police. Chandra Singh Rawat, additional DCP. Commissionerate is also joining us from Jaipur. Let me make a start with you first, Harvind Singh Shekhawat. What did you see, Harvind Singh Shekhawat, in this tragedy yesterday unfold before you? Okay, I think we've lost Harvind Singh Shekhawat, unfortunately, there. Let me try and bring in Anurag Kulshrestha at this point, if he can hear me. Anurag, what do you make of the tragedy, the sequence of events that unfolded in Jaipur and the lessons that one can learn from it? Anurag, can you hear me? Anurag, can you hear me? Okay, I think we've lost Anurag as well there. Unfortunately, I think we're having some trouble with our guests today. But Ellen Rao, let me quickly rope you in here. Ellen Rao, horrific tragedy. The death toll has risen further today as well, with regards to this fire yesterday. What do you make of what happened? Good evening. There's really a tragedy, and a very serious tragedy, rather, you can say. And the death toll has to add on since yesterday, because the bodies were charged. That was some bodies were charged for more than 50%, 60%, 70%, and whichever they could survive till today, that is there up to their capacity now. Because during treatment also some persons are are died. Then it's only because the burn injuries they could not be drawn. So this is really, and it's why it happened, because as you mentioned in your report, that there was a big sound blast, and that was actually that was I think because of this gas chambers were blasted because of some collision or by some other regions. That is a matter of investigation. I think Commissionerate of Jaipur may be able to throw light on this. What was the reason? Till now they could find out. But mainly it was because of the big fire and big blast was there, and that people were saying that they heard this blast up to 10 kilometers. So sound was there in that blast, and it's only because the gas tanker was blasted in that, and because the CNG is a very inflammable item, and if it is blown up, this creates havoc in the area. And that is really created that's the reason that the death toll is increasing, and the number of injured, I think that was also added in that yesterday's toll and yesterday injured numbers of people. Uday. Yes, Chandra Singh Rawat, come in here on what you make of the sequence of events that happened, which led to this tragedy, and the sheer expanse of the fire that spread so rapidly.
हाँ सर, yesterday morning 5:50 am ये गैस का टैंकर जो नाइट्रोजन का बता रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का, उसका ब्लास्ट, एक कोई डाक का कंटेनर आ रहा था, डाक का कंटेनर उधर से जयपुर टू अजमेर की ओर, और ये जो गैस का टैंकर है वो अजमेर टू जयपुर, वहां पर जो ये रिंग रोड है, रिंग रोड पे चढ़ने के लिए वो जो है उस कट से वापस यू टर्न कर रहा था, उसी दौरान उस डाक के कंटेनर ने उसके टक्कर मारा और नोजल के पास ही टक्कर लगी, और वो गैस का है जो रिसाव शुरू हो गया, और रिसाव शुरू होते ही उसके अंदर आग लग गई, आग लग के ये एक भयंकर ट्रेजेडी हुई है। जी बिल्कुल। क्या कुछ सीख इससे निकाला जा सकता है? इसको क्या कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है फ्यूचर में ऐसे हादसे? और रेस्क्यू एंड रिलीफ में क्या कोई कमी थी या फिर नहीं? रेस्क्यू रिलीफ के अंदर कोई कमी नहीं थी, जो भी कमिश्नरेट का के जो पुलिस कमिश्नर महोदय और सभी लोग टाइमली पहुंच गए थे, पुलिस जाब्ता भी पहुंच गया था। इसमें जो मेन देखने वाली चीज वो यह है कि जो रिंग रोड है, रिंग रोड के अंदर जो है नॉर्थ साउथ साइड की रिंग रोड कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्थ साइड की रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुई है, और ये कंप्लीट नहीं होने की वजह से प्रत्येक वाहन जयपुर के अंदर से, दिल्ली रोड वाले भी जयपुर के अंदर से जाता है, और आगरा रोड वाला भी जयपुर के अंदर से जाता है, सीकर वाला भी जयपुर के अंदर से जाता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को सबसे पहले नॉर्थ वाला रिंग रोड कंप्लीट करवाना चाहिए, ताकि आगरा और जयपुर के अंदर जाने वाला, आगरा और दिल्ली वाला और सीकर वाला पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा है जो जो फ्लोर लीफ जो होता है, जो राउंड नुमा जो पुलिया होती है, जो हमारे B2 बाईपास जयपुर के अंदर है, इस तरह की पुलिया का निर्माण किया जावे, ताकि ये यू टर्न करते वक्त ऊपर से होकर सीधा उस रिंग रोड पे चला जाए। और बाकी इसके अलावा जो पहले पुलिया के काम थे वो सब हो चुके हैं, बाकी ट्रैफिक वगैरह स्मूथली चल रहा है, और ट्रैफिक की व्यवस्था भी मैं समझता हूँ कमिश्नरेट की बहुत बढ़िया है। और NHAI को थोड़ा कहना चाहिए कि इस रिंग रोड को कंप्लीट करावे, और ये एक जो राउंड नुमा पुलिया है लीफ, उसको कंप्लीट करावे। जी, मैं यही सवाल दोबारा ले चलता हूँ एलन राव के पास। एलन राव, व्हाट लेसन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ट्रेजेडी? व्हाट can be implemented in the future to prevent the scale of such an incident? Yes, so definitely. For that, what the preventive measures which can be done, that we have to find out the reasons of this tragedy. Main reason is that it seems that yesterday I also was on some other channel. There was stated that a defective road engineering in that matter. A defective road means that conversion of some service lane was into the main road, and it was a cut in the during that highway. As per NHAI, that rarely some cut is given on the highway, but apparently I don't think that there should be any cut. If there is any diversion is to be made from one road to one side to the other side, that should be under the bridge, not anywhere in the on the road, because on highway the vehicles are coming on a very high speed, and if there is a cut and somebody wants to take U-turn or some right turn or left turn from there, then it becomes a very serious matter, and accidents are bound to happen in that matter. So number one, this is that the cut should not be there. Number two, when these the commissioners have बता रहे थे कि there was some accident and collision with the nozzle. If that nozzle is to be covered with some other device, that is maybe a rubber or some plastic, so that if there is some collision with that nozzle of the gas chamber or the gas tanker, that could have been prevented this incident, because of that accident with the nozzle, that gas reserve was there, as stated by the commissioner staff. So these are the reasons, and then another we can learn this message, that as soon as such type of incident are noticed, then not only because of this tragedy, but also the information to the road users, that should be to the drivers, and the drivers should be made aware about the rules of the highway and other roads, so that such incidents can be prevented. Training to the drivers is also very important, and rescue operation was no doubt, it was very immediately was there, and that on the receipt of call, then the fire brigade and the ambulances were there.
But unfortunately, so many people died and injured in that incident. Uday. Anurag Kulshishta, let me quickly draw you in here if you can hear me now. Anurag, I was trying to ask you earlier about this tragedy, the sequence of events that unfolded, and what lessons you believe can possibly be drawn for road safety moving forward. Yeah, actually, thank you, Udaji. I will be very specific about this. I think on all the high, there are such cuts are existing. U-turns and for the side turns and everything is there. Even the side lanes are there, service lane that is. People are taking the U-turn and entering into the service lane. Number of places, thousands, not 100 or 200. It's thousands. Everywhere this is the tradition. And second thing, whenever there's a movement of the heavy vehicles like trawlers and trucks, you have to give basically a turning radius of 14 to 16 meter so that they can turn very easily. Here they are turning on this road at where the just median is of 2 meter, only 2 meter. Means a trawler like this gas tanker has to take the U-turn, then it has to cover more than 6 lanes. Means 6 lane space is required for the U-turn for such vehicles. So it's a completely this designing fault. NHAI must provide such provisions at all the cuts so that there will be a turning radius or the U-turn of at least 15 to 16 meters to stop such type of collisions in future. But unfortunately, they are working traditionally and they're not keeping an eye on such nonsenses. Of course, we have seen Mr. Gadkari has announced number of times that only engineers are responsible for all such type of incidents, but we are not learning out of that. And one request is maybe for with the police department also. They are responsible for increasing deaths on roads. So why don't they build their own capacity for the road investigation directly, so that for every type of road, every type of junctions, they give such type of reports to the civic agencies and can stop such nonsenses. But because our police is not capable of doing that such investigation, that's why these accidents are increasing. And the civic agencies, they are continued with their own theme. Whatever they are making the roads, in which manner they are making the roads, they are continued with that. If police is a departmental accountability is not there, if police will build the capacity and they will set accountable to any the civic agencies, definitely there will be a change. Otherwise, police will be happy by announcing the number of deaths at one side, and NHAI will be happy with continuation of such type of infrastructure to take the deaths of thousands of innocent on our roads. Yes, please. Okay, Harvind Singh Shekhawat, let me quickly draw you in here as well. Just tell us a bit about what you saw yesterday unfolding in Jaipur. Sir. Harvind Singh ji, please go ahead. हाँ जी 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 बोलिए हरविंद सिंह जी, क्या कुछ देखा कल आपने? व्हाट डिड यू सी यस्टरडे? सर, मैं जयपुर से भीलवाड़ा के लिए जैसे ही मैं परिचालक हूँ बस के अंदर, एज ए कंडक्टर मेरा जॉब है जी। तो सुबह जब मैं रवाना हुआ तो 5:30 बजे या 5:40 के लगभग उस जगह पहुंचे तो मेरे से आगे एक कंटेनर जो था वो यूटर्न करते हुए जो टैंकर आ रहा था उसमें टकराया, और टैंकर के टकराते ही उसमें से गैस रिसाव हुआ और वो धीरे धीरे वो गैस हमारी तरफ फैलने लगी, चारों तरफ फैली, और विदिन 2 या 3 मिनट तक तो हमारी 50 मीटर दूर मेरी जो गाड़ी खड़ी थी उस तक तो गैस आ चुकी थी। मैंने हमारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला, पास में जो गाड़ियां थी उनको सबको बाहर निकालते हुए फिर थोड़ा सा पीछे गए थे तो पीछे ब्लास्ट हुआ तगड़ा और वहां आग लगी और सभी गाड़ियों में आग लगने से बिल्कुल खत्म हो गई गाड़ियां। जी, और कितना स्केल था ट्रेजेडी का? कितने मीटर तक आग आपने देखी आपके सामने लगती हुई? करीबन 200-300 मीटर का एरिया तो पूरा गैस के अंदर जितना जहां गैस फैली हो 300-400 मीटर के दायरे में वहां पूरी आग लग गई।
जी, और आपके हिसाब से कितनी गाड़ियां और बसें और मोटरसाइकिल और ट्रक राख हुए होंगे कल? ट्रक वगैरह मोटरसाइकिल्स वगैरह तो नहीं थी, फोर व्हीलर्स थे, 7-8 फोर व्हीलर्स थे, 2 बसेस थी जिनमें एक मेरी थी, 3-4 कंटेनर थे, ट्रेलर थे, क्या आपने तो रोड पे भी चल रहे थे। जी, क्या आपने कुछ धमाके भी सुने? खासा धमाके हुए थे, ब्लास्टिंग हुआ। जी, कैसे लोग अपने आप को बचा रहे थे? तो बचाने का था सब, जिसको जैसे जैसे मिली को सब एक भागते रहे दूर, वहां से जितना निकल सकते थे उतना निकलते रहे हम लोग। आपके हिसाब से हुआ क्या था वहां पे? ये हादसा हुआ कैसे? वो हुआ क्या सर, एक्चुअली कंटेनर ऑन द सीधा रोड पे जा रहा था, मेरे से ओवरटेक किया उसने, सामने कट था यू टर्न, उस यू टर्न कट पे गैस का टैंकर यू टर्न कर रहा था, जैसे ही वो यू टर्न करके मेन लाइन में आया और कंटेनर इधर से उसके टकराया जाके। जी, टकराने के और बाद बहुत बेकार हुआ। जी, काफ़ी स्पीड में था वो, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, क्या आपको लगता है वो कट जो है वो गलत बना है वहाँ कहीं ना कहीं? नहीं ये तो मैं, कट तो क्या है सब, देखो रोड पे आने के लिए कट तो बनेंगे ही बनेंगे, बनाना ही पड़ता है। तो स्पीड की वजह से हुआ, ये लापरवाही की वजह से हुआ, क्या आपको लग रहा है? हरविंद सिंह जी, मैं कह रहा हूँ स्पीड की वजह से हुआ, लापरवाही की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ ये? नहीं स्पीड तो थी सर गाड़ी की, लापरवाही तो कैसे, मैन हाईवे पे गाड़ी चल रही है तो सर स्पीड चलेगी चलेगी। जी, राहत कार्य कितने देर बाद आया वहाँ ये? वहां 10 से 12 मिनट के बाद। और काफ़ी टाइम लगा आग को काबू में लाने के लिए? ऐसा काफ़ी टाइम लगा आग को काबू नहीं, लाने में? नजदीकी पुलिस स्टेशन था, वहां से स्टाफ आ चुका था, उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, एम्बुलेंस आ गई थी, तो 10 से 15 मिनट के अंदर सभी अटेंडेंट आ गए थे। जी, आपकी पहला रिएक्शन क्या था? जैसे आपने देखा, भागने की कोशिश की, क्या क्या कुछ आपने किया? फर्स्ट मेरे तो पैसेंजर थे, मेरी गाड़ी में 4 पैसेंजर थे, तो सबसे पहले तो जैसे ही वो गैस का रिसाव हुआ मेरी गाड़ी की तरफ आने लगा, तो मैंने पहले उनको कहा, मेरे ड्राइवर साहब गाड़ी बंद हो गई थी तो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई आप भी निकलिए, ये गैस ज्यादा बढ़ रही है अपनी तरफ। पास में एक कंटेनर बंद था, वो भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी बोला भाई निकल जाओ, अपन निकलते हैं तो बच जाएंगे। तो विद इन 2 या 3 मिनट्स में जो हम 10-15 लोग वहां से, जो जितना हम वहां से दूर हट सकते थे, पास में एक पेट्रोल पंप था तो उसके स्टाफ को भी बोला भाई अपन दूर हट जाते हैं तो ठीक रहेगा। वहां से करीबन हम 200 मीटर के लगभग आगे निकले तो पीछे ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। गैस की वजह से आंख और मुंह में क्या तकलीफ हो रही थी? नहीं उस टाइम सर देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि हम भी हड़बड़ी में थे, तो बात की थी जी, ऐसा और क्या आपको सामने आपने देखा कि लोगों को आग लगी थी उनके कपड़ों पे, उनके शरीर पे? नहीं सर, मैं इस साइड में था, हाईवे मेरे से जो अपोजिट साइड है वो तो जी, ज्यादा इंजरी हुई थी, उन लोगों को हम देख नहीं पाए। वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। कोई सीख इससे जो निकाली जा सकती है? क्या कुछ सीख निकाली जा सकती है इस हादसे से, ताकि अन्य ऐसे हादसे ना हो, अगली बार सुधार हो, बेहतर तरीके से राहत कार्य हो? कुछ ऐसी सीख आपके नज़र में? ऐसा तो कुछ नहीं है, रात कार्य भी जल्दी स्टार्टिंग हो गया था, कोई देर भी नहीं लगी, पुलिस स्टाफ भी आ गए थे, उन्होंने कॉल्स जी, करके is an issue, Anurag Kulshreshtha, the quality of the trucks or tankers, is that an issue according to you or not? थोड़ा सा सर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल है। जी, अनुराग कुलश्रेष्ठा भी जवाब दे रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। अनुराग कुलश्रेष्ठा। Followed by such tankers very carefully, but that this is a matter of the impact from another vehicle. If impact is more, I think the 5-star rated vehicles are also not safe at more than speed of 100. So this is a matter of this. Yes, I'm just saying that there must be a provision of saving the peoples, because innocent people, they don't know what is the definition
of the cut in median at highways. There are, I think, signals are also there in these places, whether they are working or not. Even I'm just quoting one thing. Why the accidents are increasing on our highways? Because if we can learn from the Pakistan has formed a highway police since 1979. We are making roads 40 kilometers roads a day, but we don't have the highway police in our country. So this is a thing. And another is the infrastructural issue, as I already mentioned. I'm very much specific. There are U-turns must be provided on each and every road with proper turning radius, so that these heavy vehicles can take proper turn, and this back hitting or the face-to-face hitting can be avoided. Unfortunately, on all the highway, this is the same procedure which NHAI is adopting. Our police must be, basically capacity building must be there of police, so that they themselves can investigate. There are thousands of accidents. Recently in Sikar, it has happened, almost 14 to 15 were died and 43 were injured. What we have learned from there? This is also an highway. So this is going on continuously. What we have to learn, if there is a fault in infrastructure, it must be improved, not at one crossing. It must be a guideline or the set and principle. All the highways, cuts and crossing must be designed accordingly. ठीक है, Yes. कर लेंगे. 8 o'clock. Okay, I think we've lost him there. Let me take that to Chandra Singh Rawat for a quick last word, closing comment. आपके कोई आखिरी ख्याल? चंद्र सिंह रावत, अभी सुने आपने चश्मदीद गवाह ने क्या कुछ कहा, क्या सीख ले जा सकती है इससे, और क्या आपको लगता है राहत कार्य में कोई चूक थी या फिर नहीं? मैं राहत कार्य में कोई चूक नहीं थी. फायर ब्रिगेड्स, पुलिस और अदर जो भी है, एसडीआरएफ वगैरह सभी वहाँ टाइम से पहुंचती थी. राहत कार्य बिल्कुल ठीक चल रहा था. जो भी चीज होनी थी वो सडनली और एक एक्सीडेंटल थी. अब आगे जो कहना है कुलश्रेष्ठ साहब के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. एनएचआई को थोड़ा आगे लेकर के, और मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं वहाँ एसीपी वेस्ट ट्रैफिक रहा हूँ, एडिशनल डीसीपी से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रिंग रोड को कंप्लीट कराएं, ताकि सीकर, दिल्ली, आगरा और कोटा, इतना ट्रैफिक जब डाइवर्ट रिंग रोड पे हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी. और ब्लोअर लीफ के जो मैंने निवेदन किया था वो भी तैयार कराया जाए हर कट पे, ताकि क्या कि ऊपर का ऊपरी व्हीकल आकर के ऊपर का ऊपरी रिंग रोड पे चला जाए. बस मेरा अंत में यही कहना है. शुक्रिया आप सबका हमारे संग जुड़ने के लिए. वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के लिए हम रुकते हैं. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ एक्स पर.